Hello students, our new topic is electric field in the chapter number 1, electrostatics. In this topic, we read about electric field, and electric field means the electric field is the region around a charge or a system of charges within which another charge experiences the electrostatic force. It means किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर का वह एरिया या रीजन जिसमें रखा कोई अदर चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. Theoretically, the electric field extends up to infinity, but practically it is limited to the certain distance. It means अगर हम एक चार्ज लेते हैं, चाहे वो प्लस हो या फिर वो माइनस हो, तो थियोरेटिकली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से शुरू होकर के इंफिनिटी तक होना चाहिए, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता. Practically it is limited to the certain distance. Now, another term which is called electric field strength or electric field intensity, or simply it is known as electric field. So it is defined as the electrostatic force experienced by unit positive test charge placed at that point. You know that when we need to study about the electric field, we have to take a charge that will be called source charge. But if we want to find the electric field intensity at any point, we have to take a test charge. The nature of this test charge should be always positive, and it is indicated by Q naught. So here in the figure, this Q is source charge, and this Q naught, which is given with plus Q naught, is known as test charge. So when we place a test charge near a charge that is source charge, there will be a force, and the force of repulsion will be there. And that's why the direction of force is shown here outward. But when our source charge is negative and we are going to put positive test charge, then the force of attraction will be there, and the direction of this force will be towards the negative charge. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेनी है, निकालनी है, तो मुझे सबसे पहले एक सोर्स चार्ज लेना होगा जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी. पास में हम उसके एक टेस्ट चार्ज रखेंगे और उस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करेगा. So here the things are written: Q is the source charge, Q naught is the test charge, F is the force, and E is the electric field. Mathematically we can say that E is equal to F upon Q naught, as it is indicated in the definition. You read once again the definition. Electric field in strength at a point in an electric field is defined as the electrostatic force experienced by unit positive test charge. Here is the term unit. जिसके साथ यूनिट लगा होता है उसका हम डिवीजन करते हैं. सो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब हम फोर्स लेंगे और फोर्स में टेस्ट चार्ज की टोटल वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, एंड दैट्स व्हाई E is equal to vector E is equal to vector F upon Q naught. But generally, when we write the definition of electric field, we write in this way: vector E is equal to limit Q naught tends to 0 F upon Q, or limit delta Q tends to 0 vector F upon delta Q.
This is a important expression for electric field. It is asked in your board. बोर्ड में ये कई बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन का ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में लिमिट डेल्टा क्यू टेंड्स टू जीरो क्या इंडिकेट करता है? व्हाट डज लिमिट डेल्टा क्यू टेंड्स टू जीरो इंडिकेट इन दिस फार्मूला और इन दिस एक्सप्रेशन? सो इसका आंसर है द टेस्ट चार्ज is considered to be very small because its presence should not alter the configuration of the charges and thus the electric field which is intended to be measured. इट मीन्स अगर आप टेस्ट चार्ज को छोटा नहीं रखेंगे तो फिर ये क्या करेगा? चार्ज की फील्ड और चार्जेस के अरेंजमेंट को अल्टर कर सकता है, बदल सकता है। तो हम इसे इतना छोटा रखते हैं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड को ना बदले। So when we read about electric field, we have to take care of certain facts, which is given here under the heading note. We should take care of, since Q naught is taken positive, you know that the test charge is always positive. The direction of electric field is along the direction of electrostatic force. Point number 2, the electrostatic force on the negatively charged particle will be opposite to the direction of electric field. Number 3, electric field is a vector quantity. This is a very important point, whose magnitude and direction are uniquely determined at every point in the field. And the SI unit of electric field is Newton per Coulomb. So let us elaborate first 3 points. If I'm having a test charge Q naught and there is a source charge Q and the Q is positive, then this test charge will experience the force of repulsion. So this will be the direction of electric field and this will be the direction of force. So I can say that when any charge, let it be Q naught, if placed in an electric field, it will experience a force and the direction of force must be in the direction of electric field. तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई एक चार्ज जिसपे प्लस पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। इसके अपोजिट अगर आपने कोई चार्ज लिया और वो कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, तो फिर उस पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये 2 पॉइंट्स आपको क्रूशियल है। मैं एक एग्जांपल ले लूं, सपोज मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड की ये दिशा दिखाई और मैं कह रहा हूं कि इसमें अल्फा पार्टिकल मैं डाल रहा हूं। ओके, सो अब अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। पर अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन डालता हूं और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पे जो भी फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी है क्योंकि इस पे कभी कभार न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन होती है और इसी के चलते वो कैसी क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है because it has magnitude as well as direction. So
we can conclude कि if we have a source charge, suppose this is source charge and this is positive, so the direction of electric field is away from positive. What is it? Away from positive. And if it is negative, the electric field will be towards negative. चार्ज, ठीक है। अगर हमारे पास कोई सोर्स चार्ज प्लस है तो उसके कारण जो फील्ड होगी वो उससे दूर की तरफ जाती हुई दिखेगी, और अगर कोई सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसकी ही तरफ होगी। तो ये बात ध्यान रखना है। अब जो भी हमने पढ़ा, जो हमने फार्मूला पढ़ा, F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, अब उस पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल इज हियर, इफ एन oil drop of weight 3.2 into 10 raised to power minus 13 Newton is balanced in an electric field of 5 into 10 raised to power 5 Newton per coulomb, then find the charge on the oil drop. So I'm going to consider that there is, suppose कि आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया ऐसे, ये एरो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा दिखाता है। आपने यहाँ पे एक बूंद रखा, ऑयल ड्रॉप रखा, आपने ऑयल ड्रॉप का अपना वेट होता है, ठीक है। और ये ऑयल ड्रॉप चार्ज्ड है। कैसा चार्ज है? मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कितना चार्ज है पॉजिटिव इसके ऊपर? लेट इट बी Q, ठीक है। तो फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही ये चार्ज होगा इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और वो होगा F, और F की जो वैल्यू होगी वो होगी Q इंटू E। अब ये जो बूंद है, इस बूंद का अपना वेट भी तो काम करेगा। वेट कितना होता है? mg. You can write W is equal to mg, and it is written here that this is balanced. What does it mean? It means that कि ये ऊपर वाला फोर्स, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं, ये इसके वेट को बैलेंस कर लेता है। तो पहली इंफॉर्मेशन ये मिल गई हमें कि जो वेट होगा वो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के चलते बैलेंस होगा। अब वेट हमें दिया गया है, दिस इज 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 13। ई भी हमें दिया गया है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो हम ये लिख सकते हैं W इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू QE। तो फिर हम ये लिख सकते हैं W इज इक्वल टू QE। अब W की वैल्यू हमारे पास है और E की भी वैल्यू हमारे पास है, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं देन वी कैन कैलकुलेट Q इज इक्वल टू W अपॉन E, and that's why this will be 3.2 into 10 raised to power minus 13 upon 5 into 10 raised to power 5. If we do our calculation, it should be 6.4 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So that's all for today's topic.